I'm not used to this kind of hospitality. So south, let me check. Kohat. It's a couple of hours south, maybe 100 kilometers. It's South of 65 Peshawar? minutes. 65. Kohat. I heard of it, but I have no idea what to expect. So it looks beautiful on pictures. So let's see how it is in real. Looking forward to it. Yeah. I'm walking in this area, chill. This is top of this area. Very nice. And on your this side, this is district Kohat, beautiful city. Look. What a view. Yes. Unbelievable. Very nice. History and the whole thing is on this. What's Bulandi? Oh yes, it's quite high. Nice. Very happy to be here overlooking at the Kohat Valley. It's a beautiful place. We can see the lake over there. And Mr. Minister Zia Bangash invited me today with you, his entourage. I feel very privileged to be here, to discover this beautiful area. I'm looking forward to see what's there. But before we're gonna have a lunch, I believe, all together. Yes. So another good sign of the Pakistani hospitality. So thank you very much for having me. It's an honor. I'm very pleased. I left my country a while ago now, 10 months ago. Paris, I studied in Paris. By motorbike I crossed 13 countries, and Pakistan is the one I'm currently in. So yeah, very long journey to reach Pakistan, but definitely worth it. I didn't really know what to expect in Pakistan, but I only have good things to say about this country. So I entered your country through the Taftan area from Iran. Okay. And so I crossed all the Balochistan region, and then I joined Islamabad. From Islamabad, I visited the northern area all the way to the Chinese border, so through Gilgit, Naran, Honza. It was unbelievable. Very nice area. All these places through motorbike? Yes, of course, yeah, with my bike. This is the first place where I'm lucky enough to be in a car, in the comfort of a car. But before that, only traveling with my motorbike. So it's the first time for me. A big misconception, let's say, about Pakistan and its people, because before entering, I had a lot of people in my family, or friends in general, warning me, about Pakistan. Be careful; it might be a dangerous area from what we hear on TV. That Pakistan is the terrorist country. Yeah, absolutely. Not everybody say that, but that's the main idea, that you might be in danger for terrorist reasons, which is obviously completely untrue. Proof is I've never been as welcome as here. So and still some people are messaging you that you are. That's true. That's true. So some people who are following me are worried for me because I might get, I don't know, kidnapped or whatever. But the more time I spend here, the more I realize that it's a very safe place with very lovely people, kind people, and really generous. And the Pakistani, and also the Pakistani government, really made a special effort to welcome me, and I feel very safe.
right side. This is district Kohat. Yes. So shortly we will visit to some more places in this area after having lunch. Okay. Sounds good. हमारे दोस्त आए हुए हैं Pierre. He is from France. और हमारे जो कोहाट के जो लोग हैं, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको बताना था कि पिया जो है वो फ्रांस से मोटर बाइक पे वो पूरी दुनिया का विज़िट कर रहे हैं और उनकी जो डेस्टिनी थी वो पाकिस्तान में आने की, उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं इसलिए विज़िट करना चाह रहा हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से एक लोगों का एक ऐसा माइंड बना हुआ है कि पाकिस्तान कोई ऐसी दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान के लोग बड़े ख़तरनाक हैं, पाकिस्तान के लोग बस आप जाएंगे तो पाकिस्तान के लोग आपको किडनैप कर देंगे। तो ये आए और इनको हमने पाकिस्तानियों ने जो इज़्ज़त दी है, ये ख़ुद वो बताते हैं कि जब वो तफ्तान बॉर्डर से एंटर हुए तो वहाँ पे पहला जो उनके लीवीज़ के साथ इनकी इंट्रैक्शन हुई, उन्होंने बड़ा उनको वेलकम किया। फिर बलूचिस्तान में उनको ज़बरदस्त किस्म का एक प्रोटोकॉल दिया गया, फिर सिंध, फिर वो इस्लामाबाद में थे केपी में। चूँकि मैं उस पिया को मैं यहाँ पे हम केपी में होस्ट कर रहे हैं, तो पेशावर के बाद उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट जाऊँगा, क्योंकि वो फेसबुक चूँकि ज़्यादा वो कोहाट के बारे में नो हाव रखते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं कोहाट जाऊँगा। तो मैंने आज उसको कोहाट लेकर आया हूँ। तो आज आपके शहर में पिया आए हुए हैं, फ्रांस के बाशिंदे हैं और जो पाकिस्तान के बारे में उनने सुना था, आज माशाल्लाह ये ख़ुद अपनी ज़बान से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है दुनिया में, वो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक बेहतरीन कंट्री है, एक पीसफुल कंट्री है और उन्होंने अब दुनिया को मैसेज भी दिया है कि दुनिया के लोग यहाँ पर आएँ। पाकिस्तान के लोग उनको हर किस्म की मतलब इज़्ज़त भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो ये आज का बताने का मकसद था कि आज गेस्ट आए हुए हैं, आपके शहर में मौजूद हैं और उनको आज हम मुख्तलिफ जो कोहाट के एरियाज़ हैं उनको विज़िट करवाएंगे। And everything was very tasty, very yummy. It was amazing, very fresh food, organic food. The bread is delicious. I love it.
Thanks again for the ride. Thank you. Shukriya.